So we have seen that there were two types of data types, primitive and non-primitive data types. First, we'll cover the primitive data type, and second, when we will study the classes, then we'll discuss about the non-primitive data type. So probably in the second unit or third unit, we are going to discuss about the non-primitive data type. Okay, so these were the primitive data types, and the memory size was given with the data type, key how much memory your data type is going to take, 1 bit, 8 bit, 16 bit, and so on. Apart from this, we have discussed about the char data type, why it is taking 16 bit, and the another name of char data type was Unicode, universal code data type. Fine. And also we discussed about the condition of long, float, and double, why you have to write down L, F, or D after the value of long, float, and double. Now we'll consider some examples of the data type, and we'll execute these programs also, some sample programs also, and then we'll go to the operators when we'll start with the operators. Fine. So see this sample program. In this sample program, we have the integer data type, double data type, and char data type. Now you can see that integer data type is simply having 10, but the double data type, when I'm writing the value, I've written D over here. Fine. Which means this value is a double value. Accuracy is 16 decimal point, and the size is 64 bit. Fine. And the char will have the simple characters. Then we have printed these values. Fine. Now we'll see some sample programs online so that you will have an idea about the different data types. The first program that we are going to consider is a program to convert the Fahrenheit to Celsius degree. And when you want to convert the Fahrenheit to Celsius degree, the formula is 5 multiplied by Fahrenheit minus 32 and divided by 9. So this is the formula. And yesterday I have told you what is the purpose of this string array as an argument to the main function. So it is basically considering that you are going to enter your input from the command line. So to handle the values of the command line arguments, we pass this string array, and it is a compulsory argument whenever you are writing the main function, right? So what am I going to do in this program? The Fahrenheit is declared as a double variable because it can take decimal values also, and I'll take it by the command line. So obviously only single value I'm going to pass. So यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि कैसे पास करूँगी. My program name will be ex1.java because the class name is ex1. Fine. So when I am going to run this or interpret this program, I pass the value of the Fahrenheit. So suppose I have passed 45 or 45.5 as a value of the Fahrenheit. So this value will go to the first index of the array A1. So which is A10, and because it is a string array, yesterday we have considered that it is the string array. So we have to consider this, convert it into the data type. Yesterday we have used integer. Today we are using double. So the command will be double dot parse double. Yesterday command was integer dot parse and to convert the value of a string to integer. Now this function is used to convert string value to double, right? So that is why I have used this function. So my program is already saved with ex1.java. Now I'm going to compile this program and then we will execute this program. So I'm going to the command line interpreter, command line prompt,
So I hope you all can see this command line prompt. Java C 1.java. So I have compiled the program. There is no error. So probably my .class file is created. So ex1.class file is there. Now I will call JVM by using a Java command ex1. And with this, I'm going to pass the parameter value of the Fahrenheit, that is 35.5. Now you can see that 35.5 degree Fahrenheit is equal to 1.94 Celsius as per that formula. If that formula is correct, then it is converted correctly. So let's run this program once again. Say I have given 45, so the Celsius is 7.2 as per the formula. So I hope the command line argument revision is clear to everyone, and also the double data type is clear to everyone, and how you are going to convert your string value to the double data type. Now the next program that we are going to do, अब ये वाला प्रोग्राम मैं आपको और करके बताऊंगी. Then third program is your assignment. You have to perform that program and you will share the output with me as a screenshot. Fine. So the next program that we are going to do is, let me save as this program as ex2. The program that we are going to do is, we will pass the value in inches and then we will convert that inch value into meter. So I'm going to pass inch and I wish to convert into meter. Fine. So what is the formula to convert it? 1 inch equals to होता है 0.0254 meter. I'm sorry, 0.0254 meter. We are going to use this particular formula and we will pass the value from the command line argument. जो inches है उसको मैं command line argument पे pass करूंगी. So I'm assuming that my inches are in the whole values, like 5-inch integer value. So this variable should be int and the name of the identifier I am going to put as inch. कौन बताएगा क्या लिखे यहाँ पर? कन्वर्जन के लिए कौन सा फंक्शन है? integer %. Good. So it is going to convert your string value into integer. Then I will take double because meter आपका decimal में आ सकता है. So I have taken a variable meter and then I will write the formula to convert your inches into meter. So what will be the formula? Inch multiplied by 0.0254, right? And यहाँ पर मैसेज दे देते हैं इंच इक्वल्स टू कितना मीटर हुआ. ठीक है भाई. आई होप मैसेज इज क्लियर टू एवरीवन. वेरिएबल की वैल्यू आएगी यहाँ पे इक्वल्स टू प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू आएगी. First of all, you see the program. Is there any problem in the program? कहीं पे कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आया? So we are going to save this program as ex2.java. Now we'll execute this program using the command line. So I'm going to execute my program javac ex2.java. First of all, we'll compile it. It is compiled. Now I am going to call the Java interpreter and I have passed 5 inches. So it is giving you 5 inches is equal to 0.127 meters. अभी पता नहीं चल रहा है कि इंच क्या है और मीटर क्या है. So let's improvise your program messages. तो प्रोग्राम में वापस जाते हैं और मैसेजेस को इम्प्रूव करते हैं.
inch equals to इतना meter. Your message will be quite clear. पता चल जाएगा आपको इतना इंच है और equals to इतना मीटर है. So let's compile this program once again and then we'll execute this program. So see 5 inch is equal to आगे पीछे आप मैसेज को कर सकते हो इतना मीटर. We can change the value. इसको 12 इंच करके देख लेते हैं. इतना मीटर आया. इसको और बढ़ा के देख लेते हैं 40 inches. 40 inches is equal to 1.016 meter. So in that way you can create the programs in Java using different data types. Fine. So now I'm giving you a problem. And the problem is आपको बनाना है program to add the digits of the number and the maximum number should be 3 digits and you are not going to use loops and conditions. So I'm writing down the problem statement over here. आपको क्या करना है? Find the sum of मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर. आपको मैक्सिमम 3 डिजिट का नंबर पास करना है एंड द नंबर शुड बी इंटीजर नंबर और विदाउट एनी लूप, क्योंकि आपको मैंने लूप पढ़ाया नहीं है, और कंडीशन, और मैंने आपको कंडीशन भी नहीं पढ़ाई है. सो यू आर नॉट गोइंग टू यूज लूप्स एंड कंडीशंस ओवर हियर. और आपको प्रोग्राम बनाना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपने इनपुट डाला 253, सो आई शुड गेट 2 + 5 + 3. अगर आपने डाला 41, सो आई शुड गेट 4 + 1. चलिए बनाइए एंड शेयर द आउटपुट विद मी. स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजेंगे एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक यू कैन डिस्कस विद मी एंड रिमेंबर दैट. हाँ मैम स्क्रीनशॉट चैट बॉक्स में डालना है. हाँ आप अपने पोस्ट सेक्शन में डाल सकते हो. आई कैन सी दैट. स्क्रीनशॉट आप पोस्ट सेक्शन में डाल देना एज ए मैसेज. आई विल सी दैट. और यू कैन पोस्ट इन द चैट में डालोगे तो इंडिविजुअली दिख जाएगा. बट स्टार्ट डूइंग दैट. आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. आपको 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर डालना है, which means your number can be maximum 999 and your minimum number can be 1. 0 we are not considering. डाल भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. And one more thing you have to remember कि number should be positive. तो आपको positive integer number ही डालना है and number should be in the range of 0 to 999. इससे बड़ा आपको नंबर नहीं डालना और इससे छोटा आपको नंबर नहीं डालना है. जिन्होंने जावा पढ़ा हुआ है दे आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू यूज लूप्स एंड कंडीशंस. बिना लूप एंड कंडीशन के बनाना है आपको.
Anyone completed? Does anyone require any hint, or you can make it? No, we can make it. Ma'am, I've got the output. You have got the output. Paste on the chat. Yes, ma'am. And I would appreciate if you all can perform this program parallelly with me. So I'm doing it with you. So the number is, suppose I'm taking in n. So integer dot parse int, and I would appreciate if you will use command line argument instead of using the scanner method who already studied Java. So please do not use the scanner method. We'll discuss it later on. Right now, if you can use command line argument, I'll more appreciate. So I'm taking a first number, and how will I get the first number for the addition? So number divided by, in fact, remainder I'll take it as, I'll use a mod symbol, and the first number I'll get. So after that, you need to calculate the remaining number. So suppose R I have taken as a remaining number. So the remaining number after remainder digit is R. Then I'll take the second number, and the remaining number is R, and for that I'll calculate the remainder. Then again you need to calculate the remaining number. So the remaining number is R. Then you have third number, that is C, which is equal to remaining number and remainder 10. And then you need to perform the addition. So I'm doing it in a one go. Digits equals to, what is the sum? A plus B plus C. ने कोई और लॉजिक लगाया है? मैम मैंने सम नाम का एक वेरिएबल बना के उसी में ऐड करता रहा एंड रिड्यूसिंग द ओरिजिनल नंबर बाय 10. लूप लगाया है? नो नो मैम, तीन बार स्टेटमेंट्स लिखे हैं. अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ वो भी चलेगा. और कोई, किसी ने और कोई लॉजिक लगाया? हेलो.
मैम मैंने 100 से डिवाइड करा, फिर 10 से मॉडुलस निकाला, 10 से डिवाइड करा और फिर 10 से एक मॉडुलस निकाला, तो तीनों वैल्यूज आ गई। Fine. So you have already checked, no, कि it is going to take 1 number also, 2 number also, 3 number also, or you have checked only for the one input? मैम चेक फॉर 3 वैल्यूज 0 to 999। Check for 2 values also, check for 1 value also, no? ओके मैम। Your program required to check for all digits. तो 1 digit के लिए भी चेक करिए, 2 के लिए भी चेक करिए और 3 के लिए भी चेक करिए, because मैम minimum मेरे इसमें 1 तीनों digit। डिजिट के आउटपुट आ रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि आप इसको 1 के लिए भी चेक करिए, 2 के लिए भी चेक करिए और 3 के लिए भी चेक करिए। So I'm sharing the output of my program. आपको इस तरीके से अपने प्रोग्राम का आउटपुट चेक करना है for all the conditions. And this is the original method to do or to solve any problem in the placement also. Remember that placement में whenever you will get any problem, there were some conditions given to you. There will be some conditions given to you, and your program should follow all the conditions. And remember that वहां पर debugging का कोई method नहीं मिलेगा. So whenever you are creating a logic, you have to check your logic for all the conditions. Fine. अच्छा, कितने लोगों ने अकाउंट बनाया है Geeks for Geeks और Hacker Rank पे? Have you made an account for Hacker Rank and Geeks for Geeks? यस मैम। यस So if you have not created, then I would request कि you create an account on these two, and in fact Tech Git पर भी आप अपना account बना सकते हैं, so that you can have the current placement problems and you can solve them. And also create the account on freshersworld.com also. There you will get the placement papers of different companies. So try to create the account on these websites. And if you face any problem while solving, you can ask me. If I'm free, then I'll participate with you. So I hope this problem is solved by everyone. I'm considering कि काफी लोगों ने कर लिया होगा ये solve. So एक और problem दे रही हूँ, यहाँ मत solve करिएगा, but आप इसको solve कर लीजिएगा. So you need to input minutes. आपको मिनट्स इनपुट करने हैं, इनपुट मिनट्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स. आपको नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करने हैं. अब लॉजिक खुद से लगाइएगा कि एक ईयर में कितने मिनट्स होता है. कोई बताएगा? हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 ईयर? 1 ईयर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स? अगर हम स्टैंडर्ड मान करके चलें कि आपका ईयर 365 डेज का है, तो कितने मिनट्स होंगे एक ईयर में? 5 lakh 365 into 24 into 60. 365 into 24 24 into 60. 60. into 60. You apply this formula, you will get the minutes. Sorry, you will get the years. Fine. So in 1 year, these are the minutes. So for your program, it will ask for the minutes and it will give you number of years as per your number of minutes. तो ये बना करके देख लीजिएगा, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा डेटा टाइप्स एंड सिंपल सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स बनाने का. फाइन. So I'm going to share the screen again for the PPTs. Till now, if anyone is having any question, किसी को कुछ पूछना है? मैम हाँ, मैम वो एरर आ रहे थे फोटो खींच रहा हूँ। एरर आ रही है. आप एरर को पोस्ट कर दीजिए चैट पे. आई विल सी दैट एरर. एरर आ क्या रही है? कमांड नॉट फाउंड. मैम 5 आ रही है। Okay, you post the error in the chat. When I'll finish the lecture, I'll give you the error solution. Fine. कर
Okay, so there is a concept of keyword. You know that this concept. These are the reserve words. Basically, क्या reserve words हैं? Data type के लिए जो words fix हैं, या फिर commands के लिए जो words fix हैं. These are the keywords. And what condition you require to follow? जब आप keywords को use करते हैं, then you can't declare the name of the variable or the identifier with the name of keyword. Like if नाम का identifier आप नहीं बना सकते. Float you can't give as a variable name. String you can't give as a variable name. So these are the keywords. So you have to take the precaution while declaring the name of the variable that it cannot be keyword. Fine. So these are the reserve word of the language. Every language has a reserve word. Fine. So let's start with the operators. Okay. So to making the expressions in the programming language, you require certain kind of operators. So there are various categories of operators. I'll discuss one by one. So arithmetic operator, assignment operator, logical operator, comparison operator. Apart from that, you have increment and decrement operator, that is also called as unary operator, and the bitwise operator. Fine. So we'll talk about each and every operator separately. So unary operator has two categories. You can see that unary operator has two categories: postfix and prefix. Postfix and prefix. Fine. So if you are applying the operator after the expression or after the variable, then it is postfix. And what is postfix? It will use the value first and then increment or decrement. Okay? And prefix is basically when you are using operator first, then you are using the value. Then value is utilized. Then it is a prefix operator, unary operator. So it will increment or decrement value first, and then it will apply it on then it will use the value of the variable. Then we have arithmetic category. These are the arithmetic operators. दो कैटेगरी जनरली अगर आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो है. यहाँ मल्टीप्लिकेटिव का मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है. दिस इज द नेम ऑफ द कैटेगरी. तो ये दो कैटेगरीज हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की. देन वी हैव शिफ्ट ऑपरेटर्स, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट. दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड एज साइंड शिफ्ट ऑपरेटर. साइंड शिफ्ट ऑपरेटर, राइट. Then we have relational category, comparison and equality, दो categories है इसमें. Then we have bitwise category. So bitwise and or XOR, these are the categories of the bitwise operator. Then we have logical operators and or. Then we have ternary operators. Then we have assignment operators. Fine. So let's see arithmetic operator first. ये अभी आपने programs में use भी कर लिया है. So we'll discuss about only these two operators. So this is the division. It will give you the result of the division, and this is the remainder or modulus sign. So it will give you the remainder of the division. As you can see in the example, if you are dividing 3 by 2 with the remainder sign or the modulus sign, you'll get 1 as a result. Fine? Okay. This is the example that I have given. It is very easy to understand. I think there shouldn't be any problem. Now, can you justify the result of this? यहाँ पर 10 क्यों मिला है आपको? और यहाँ पर 9. पोस्ट इंक्रीमेंट है. पहले ये कैटेगरी कौन सी है? इट इज अ यूनरी ऑपरेटर ऑफ किस कैटेगरी का? पोस्ट या प्री? Postfix, which means it will use the value first, then it will apply the operator. तो यहां पर अगर मैं a की वैल्यू देखूं तो it should be 10, बट वैल्यू को यूज करने के बाद आपने ऑपरेटर लगाया हुआ है और इसके बाद आपने system.out.println लिखा है. So that is why I will receive 9 over here, because 10 में आपने a को माइनस करा तो यहां पर 9 मिलेगा आपको. फाइन. और इनका तो आपको आउटपुट पता ही होगा. इसका आउटपुट क्या आएगा? 30
we'll get 30 over here. इसका आउटपुट क्या आएगा? टेन एंड इसका आउटपुट 200 100. Okay. Fine. Now who is going to tell me the meaning of left to right associativity? ये एक्सप्रेशन है आपके पास. This is the expression. 2 plus 3 minus 4 multiplied by 5 remainder 8 divided by 4. How this expression is going to be solved? So whenever you are solving any arithmetic operation, it will take left to right associativity. Associativity का मतलब होता है the operator will be connected with left or right. Fine. So आपका जो operator है वो left वाली value के साथ connect होकर के चलेगा. So जब आप stack में इसको डालेंगे और precedence rule लगाएंगे, precedence rule में क्या होता है? प्लस एंड माइनस बाद में आते हैं एंड आपका मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर एंड डिवीजन इनका प्रेसिडेंस हाई होता है. तो जब हम लेफ्ट चलना शुरू करेंगे आपके पास प्लस आएगा, देन माइनस आएगा, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, देन मल्टीप्लिकेशन आएगा. सो इन दोनों के कंपैरिजन में मल्टीप्लिकेशन का जो प्रेसिडेंस है दैट इज हाई, दैट इज व्हाई मल्टीप्लिकेशन विल बी सॉल्व्ड फर्स्ट. So that is why your expression will become 2 plus 3 minus 20 remainder 8 divided by 4. Then क्या solve होगा? Multiplication के बाद ये निकल गया. Now multiplication के बाद ये बचा हुआ है. Now you will push another symbol in the stack. That is remainder. So remainder is there. And the remainder has a higher precedence in comparison to plus and minus. So remainder will be solved over here. Remainder solve हो गया. Remainder solve होने के बाद आपके पास जो operator आएगा वो आएगा division. So division will be solved first. So यहाँ पर आ जाएगा 1. And after that, क्योंकि minus ऊपर की तरफ है, so minus will be solved. प्लस उसके बाद है, सो प्लस विल बी सॉल्व्ड. फाइनली योर रिजल्ट इज 4. प्लस और माइनस हैज द इक्वल प्रेसिडेंस एंड इक्वल एसोसिएटिविटी. सो आपने स्टैक के अकॉर्डिंग पहले माइनस को सॉल्व कर दिया और उसके बाद आपने प्लस को सॉल्व कर दिया. सो एनीवन इज हैविंग एनी कंफ्यूजन इन सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन? हम प्लस माइनस से पहले प्लस नहीं आएगा अगर हम लेफ्ट राइट एसोसिएटिव लेंगे तो. लेफ्ट एसोसिएटिविटी का मतलब हो रहा है यू आर रीडिंग विच ऑपरेटर फर्स्ट. लेफ्ट टू राइट आप ऑपरेटर्स को पढ़ रहे हो. तो अगर ये मेरा स्टैक है तो प्लस आएगा और प्लस के ऊपर माइनस आएगा. टॉप पे क्या है? माइनस. माइनस ना सॉल्व होगा पहले. यस. ओके. और किसी को कोई कंफ्यूजन है एक्सप्रेशन में? So we'll discuss about the relational operators and then we'll end up the lecture. So suppose I have declared 3 values over here, x, y, z, 2, 3, 3, and then I'm making the Boolean variable r1 over here to check whether this relationship is true or false. Remember that if the condition is true, I'll get true as a result. If the condition is false, I'll get false as a result. So value of x is 2. Value of y is 3. I'm comparing 2 with 3 as a greater than symbol, which means if 2 is greater than 3, obviously we'll get false. Similarly, in this case, we'll get true because the condition is greater than equals to. So both values are equal. That is why I'm getting true. Now suppose the value of z is 4, then in that case क्या मिलेगा? If the value of z is 4, what will I get? True. Still you will get true over here. True. Fine. But अगर इसको मैं less than equals to कर दूं तो क्या मिलेगा? And value of z is 4. False.
अरे भैया y is less than equals to z, मैम ट्रू ट्रू मिलेगा ना? True. हाँ, ओके। सो यहाँ आ जाते हैं नीचे की तरफ। सो आई होप ये एक्सप्रेशंस भी क्लियर होंगे आपको। कोई कंफ्यूजन? यहाँ कोई कंफ्यूजन या यहाँ कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. x No, equals to y, both values are not equal, that is why it is giving false. And y is not equals to z, both values are equal, 3 3, so that is why it is giving false. Okay, now we'll come to the assignment operator. So इसको एक बारी देख लेते हैं। Okay, assignment operators में एक तो आपके पास assignment है, then you have plus assignment, then you have multiply, division and mod assignment. And remember that assignment operator की associativity होती है right to left, which means the right expression will be solved first, then the value will be assigned into left. Confuse मत होइएगा, stack में left to right ही जाएगा, लेकिन associativity किसकी? assignment operator की associativity right to left है, which means the right part will be solved first, फिर जो भी result आएगा that is going to be assigned in the left part. That is why the associativity is right to left. लेकिन अगर मैं इसकी associativity आपसे पूछूं तो left to right ही होगी, stack में left to right ही जाएगा आपका expression. फाइन, जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल गो टू द एक्स। कोई कंफ्यूजन है राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी में किसी को? नो मैम ओके, तो ये समझाने की जरूरत है, ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे आप। इसका मतलब क्या होता है? x इज इक्वल टू x प्लस वाई। द सेम एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज दिस ऑल्सो।